हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आनंद तोमर एंड आई होप आप सबने पिछले लेक्चर का सारा रिवाइज कर लिया होगा, तभी आप आज के लेक्चर में जुड़े हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ इस लेक्चर में नहीं जुड़ रहे हैं तो उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि वो जाकर पहले स्टार्टिंग के सारे लेक्चर देख ले, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे और आपकी कॉन्सेप्ट में अच्छी पकड़ हो सके। उसी के साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से आगे बढ़ा सके। So let's begin our lecture without any delay, and I think we have learned 22 rules and our last rule was try to. We have already done a good revision of our starting 10 rules, so in our today's lecture we will only do revision of our last 12 rules. And our first rule is follow. Whenever we try to showcase some likable habit of something or someone, there we use of this rule. And our next rule is seek off. Whenever somebody feel irritating, boring, or somebody feel unwell, so there we use of this rule. And our next rule is afraid of. Whenever we try to showcase some fairness thing of something or someone, so there we use of this rule. And our next rule is dare to. Whenever we try to showcase some daring things, whenever we try to showcase some capabilities, abilities, strength, and dare that he has there and he can commit it, all those things, so there we use of this rule. And our next rule is student must. Whenever we try to give a suggestion or advice to someone or somebody, so there we use of this rule. And our next rule is how to. Whenever you ask a question to someone that do you know how to do this thing, then he replies to you that yes, I know how to do this thing. Then you continuously ask a question to him that how do you know how to do this thing? Then he replies back to you that I know how to do this thing because I have learned it. That's why I can do this thing. If you learn all the things, so you also can do whatever do you want to do. And our next rule is bound to. Whenever you try to showcase the foundation, boundary, limitation, or limit that these are your limits and you can't cross all the limits, so there we use of this rule. And our next rule is insist on. Whenever you try to do a polite request or whenever you try to put a pressure on your words or anybody, so there we use of this rule. And our next rule is order. It means whatever do you have, it is working properly or not, it is in order or it is completely out of order, so there we use of this rule. And our next rule is have been. Whenever you try to showcase the actual time duration, that whatever you have been doing from a long particular time, whenever you try to mention a time duration, so there we use of this rule. And our next rule is going on. It we use in our daily life that do you have any plan for future, that you want to do all those things or you are going to do these things, so there we use of this rule. And our last rule is that we have learned yesterday, which is try to. Whenever we try to do some initiative in our life or by any activity, so there we use of this rule. Now let's see some example from each rule, which is that are you fond of ड्रिंकिंग वाटर, कि क्या तुम पानी पीने का शौकीन हो या फिर क्या तुम्हें पानी पीने का शौक है। इफ यू हैव देन यू विल से दैट यस आई एम फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कि हाँ मुझे पानी पीने का शौक है या फिर मैं पानी पीने का शौकीन हूँ। बट इफ यू डिनाई देन यू विल से नो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। व्हाई आर यू नॉट फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कि तुम पानी पीने के शौकीन क्यों नहीं हो या फिर तुम्हें पानी पीने का शौक क्यों नहीं है। देन यू रिप्लाई टू अस दैट आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज आई डोंट हैव हैबिट ऑफ दिस, और आई एम फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि मुझे इस चीज़ की आदत नहीं है इसलिए मैं पानी पीने का शौकीन नहीं हूँ, या फिर मुझे पानी पीने का शौक नहीं है, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने का शौक है या फिर मैं कोल्ड ड्रिंक पीने का शौकीन हूँ। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट रूल, व्हिच इज दैट आर यू सिक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कि क्या तुम पानी पीने से दुखी या परेशान हो रहे हो। इफ यू आर देन यू विल से दैट यस आई एम सिक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कि हाँ मैं पानी पीने से दुखी या परेशान हो रहा हूँ। बट इफ यू आर नॉट देन यू विल रिप्लाई नो आई एम नॉट सिक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कि नहीं मैं पानी पीने से दुखी या परेशान नहीं हो रहा हूँ। Then you will ask question to that why are you not sick of drinking water, कि तुम पानी पीने से दुखी या परेशान क्यों नहीं हो रहे हो। Then you will reply to us that I am not sick of drinking water because I have habit of this, क्योंकि मुझे इस चीज़ की आदत है इसलिए मैं पानी पीने से दुखी या परेशान नहीं हूँ, या फिर इस वजह से मैं दुखी या परेशान नहीं हो रहा हूँ। Then you will move forward to our next rule, which is afraid, that do you afraid to drink water, कि क्या तुम पानी पीने से डरते हो। If you are then you will say that yes I am afraid of drinking water, कि हाँ मैं पानी पीने से डरता हूँ। बट इफ यू आर नॉट देन यू विल से नो आई डोंट अफेयर ऑफ ड्रिंक वाटर, कि नहीं मैं पानी पीने से नहीं डरता हूँ। देन यू विल आस्क अ क्वेश्चन टू दैट व्हाई डू यू नॉट अफेयर ऑफ ड्रिंक वाटर, कि तुम पानी पीने से क्यों नहीं डरते हो। देन यू विल रिप्लाई टू अस आई डोंट अफेयर ऑफ ड्रिंक वाटर बिकॉज आई हैव हैबिट ऑफ दिस एंड इट इज अ नेचुरल रिसोर्स टू ड्रिंक, क्योंकि एक नेचुरल रिसोर्स है पीने के लिए इसलिए मैं इस चीज से नहीं डरता हूँ। देन यू विल मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट रूल, व्हिच इज डेयर टू,
that do you dare to drink water कि क्या तुम में इतनी हिम्मत है तुम पानी पी सको. If you have then you will say that yes I dare to drink water कि हाँ मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं पानी पी सकूं. But if you have not then you will say no I don't have dare to drink water कि नहीं मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पानी पी सकूं. Then you will ask a question to that why do you not have dare to drink water कि तुम में इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि तुम पानी पी सको. Then you will reply to us because I don't have habit of this that's why I don't have dare to drink water क्योंकि मुझे इस चीज की आदत नहीं है इसलिए मुझे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पानी पी सकूं. Then we will move forward to our next rule which is should and must that should you drink water कि क्या तुम्हें पानी पीना चाहिए. Then you will reply to us that we must drink water कि हाँ हमें पानी पीना ही चाहिए. But if you deny then you will say no we should not drink water कि नहीं हमें पानी नहीं पीना चाहिए. Then you will ask a question to that why should we not drink water कि हमें पानी क्यों नहीं पीना चाहिए. Then you will reply to us we should not drink water because we should drink milk or we should drink tea क्योंकि हमें चाय या फिर दूध पीना चाहिए इसलिए हमें पानी नहीं पीना चाहिए. और you can use that we should drink milk and we should not drink cold drink क्योंकि हमें पानी पीना चाहिए और हमें cold drink नहीं पीना चाहिए. And our next rule which is that do you know how to drink milk कि क्या तुम्हें पता है दूध कैसे पीना है. If you know then you will say that yes I know how to drink milk but if you don't then you will say no I don't know how to drink milk कि नहीं मुझे नहीं पता है कि दूध कैसे पीते हैं. Then he will ask a question to that why do you not know that how to drink milk कि तुम्हें ये क्यों नहीं पता है कि दूध कैसे पीते हैं. या फिर I don't know that because I don't have learned it क्योंकि मैंने चीज सीखी नहीं है इसलिए मुझे नहीं पता है. Then we will move forward to our next rule which is that are you bound to drink milk कि क्या तुम दूध पीने के पाबंद हो या फिर तुम्हारे पास ऐसी कोई लिमिटेशन है. If you are a child then you will say that yes I am bound to drink milk कि हाँ मुझ पे ऐसी लिमिटेशन है कि मैं दूध पीऊँ. But if you are not then you will say no I am not bound to drink milk कि नहीं मुझ पे ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि मैं दूध पीऊँ या फिर नहीं. Then you will ask a question to that why are you not bound to drink milk कि तुम पाबंद क्यों नहीं हो कि तुम दूध पियो. Then you will say I am not bound to drink milk because now I am getting old क्योंकि मैं अब बड़ा हो गया हूँ इसलिए मुझे ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि मैं दूध पीऊँ. Then you will move forward to our next rule which is that do you insist on your parents to drink water with you कि क्या तुम अपने माता पिता या फिर अपने दोस्तों को इंसिस्ट करते हो कि वो पानी तुम्हारे साथ में पिए. If you agree then you will say that yes I insist on my parents or my friends to drink milk or drink water with me कि हाँ मैं अपने माता पिता अपने दोस्तों को इंसिस्ट करता हूँ कि वो दूध या फिर पानी मेरे साथ में पिए. But if you don't then you will say no I don't insist on my parents or my friends to drink milk with me कि नहीं मैं अपने दोस्तों या फिर माता पिता को इंसिस्ट नहीं करता हूँ कि वो दूध मेरे साथ में पिए. Then you will ask a question to that why do you not insist on your parents or your friends to drink milk with you कि तुम अपने माता पिता या फिर अपने दोस्तों को इंसिस्ट क्यों नहीं करते हो कि वो दूध तुम्हारे साथ में पिए या फिर पानी तुम्हारे साथ में पिए. Then you will say that because we both are getting old we are not a child that's why I don't insist on my parents or my friends क्योंकि अब हम सब बड़े हो गए इसलिए मैं अपने पेरेंट्स और अपने फ्रेंड्स को इंसिस्ट नहीं करता हूँ. Then we will move forward to our next rule which is that do you have a car कि क्या तुम्हारे पास एक गाड़ी है. If you have then you will say that yes I have a car. Then you will ask a question to that is it working properly कि क्या वो ठीक से काम कर रही है. If it is working properly then you will say that yes हाँ कि वो अच्छे से काम कर रही है. But if it is not then you will say no it is completely out of order कि वो out of order हो चुकी है या फिर वो अच्छे से काम नहीं कर रही है. Then you will move forward to our next rule which is that have you drinking water since last your childhood कि क्या तुम अपने बचपन से पानी पी रहे हो. If you agree then you will say that yes I have been drinking water since last my childhood कि हाँ मैं अपने बचपन से पानी पी रहा हूँ. But if you are not then you will say no I have not been drinking water since my childhood कि नहीं मैं अपने बचपन से पानी नहीं पी रहा हूँ. Then you will ask a question to that why have you not been drinking water since your childhood कि तुम अपने बचपन से पानी क्यों नहीं पी रहे हो. Then you will ask a reply to us that I have not been drinking water since my childhood because I have been continuously drinking tea क्योंकि मैं चाय पी रहा हूँ इसलिए मैं अपने बचपन से पानी नहीं पी रहा हूँ. Then you will ask a more next question to that are you going to drinking water कि क्या तुम पानी पीने जा रहे हो. If you have planned so you will say that yes I am going to drinking water कि हाँ मैं पानी पीने जा रहा हूँ. But if you deny then you will say no I am not going to drink water कि नहीं मैं पानी पीने नहीं जा रहा हूँ. Then you will ask a question to that why are you not going to drink water कि तुम पानी पीने क्यों नहीं जा रहे हो. Then you will reply to us I am not going to drink water because I don't have plan of anything क्योंकि मुझे ऐसी किसी भी चीज का प्लान नहीं है इसलिए मैं पानी पीने नहीं जा रहा हूँ.
Then we will move forward to our last rule that we have learned yesterday, that do you try to drink water, कि क्या तुम पानी पीने का प्रयास करते हो. Then you will reply that yes, I try to drink water, कि हाँ मैं पानी पीने का प्रयास करता हूँ. But if you deny, then you will say no, I don't try to drink water, कि नहीं मैं पानी पीने का प्रयास नहीं करता हूँ. Then you will ask a question to that why do you not try to drink water, कि तुम पानी पीने का प्रयास क्यों नहीं करते हो. Then you will reply to us I don't try to drink water because I don't like to drink water, क्योंकि मैं पानी पीना पसंद नहीं करता इसलिए मैं पानी पीने का प्रयास नहीं करता हूँ. Now let's come to our today rule, which is, and our today rule is would. Whenever we depend on someone else, that would he do this thing on future or not, so there we use of this rule. And its question portion is that would you do plus any action, कि क्या तुम ये चीज करोगे. It is like a will that whenever you try to showcase some future events, so there we use of this rule. But whenever we ask for permission, so there we use also of this rule. If you agree, then you will say that yes, I would do plus any action, कि हाँ मैं ये चीज करूंगा. But if you deny, then you will say no, I would not do plus any action, कि नहीं मैं कोई भी चीज या फिर मैं ये चीज नहीं करूंगा. It can be any action. In mostly cases we have to use would more than will. And now let's see some example at would you drink water, कि क्या तुम पानी पियोगे. If you agree, then you will say that yes, I would drink water, कि हाँ मैं पानी पीऊंगा. But if you deny, then you will say no, I would not drink water, कि नहीं मैं पानी नहीं पीऊंगा. Then you will ask a question to you that why would you plus any action, कि तुम ये चीज क्यों नहीं करोगे. Then he will reply to you that because I don't want to do this thing, that's why I would not do this thing, क्योंकि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, फिर मैं ये चीज करना नहीं चाहता इसलिए मैं चीज नहीं करूंगा. Then he will ask a question to you that would you read newspaper, कि क्या तुम अखबार पढ़ोगे. If you have plan and if you want to do by yourself, then you will say that yes, I would read newspaper, कि हाँ मैं अखबार पढ़ूंगा. But if you don't want to do, then you will say no, I would not read newspaper, कि नहीं मैं अखबार नहीं पढ़ूंगा. Then you will ask a question to that why would you not read newspaper, कि तुम अखबार क्यों नहीं पढ़ोगे. Then you will reply to us that I would not read newspaper because I don't have plan or I don't like to do these things, क्योंकि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है और मैं इन चीजों को करना पसंद नहीं करता इसलिए मैं अखबार नहीं पढ़ूंगा. Would you play cricket, कि क्या तुम क्रिकेट खेलोगे. If you want to do by yourself, then you will say that yes, I would play cricket, कि हाँ मैं क्रिकेट खेलूंगा. But if you don't have plan and you don't want to do by yourself, then you will say no, I would not play cricket, कि नहीं मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा. Then you will ask a question to that why would you not play cricket, कि तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलोगे. Then you will reply to us that I would not play cricket because it is my choice, क्योंकि मैं क्रिकेट इसलिए नहीं खेलूंगा क्योंकि ये मेरी चॉइस है. Let's see our last example of our today lecture, which is that would you take tea, कि क्या तुम चाय पियोगे. If you agree, then you will say that yes, I would take tea, कि हाँ मैं चाय पीऊंगा. But if you don't have plan or you don't want to do by yourself, then you will say no, I would not take tea, कि नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगा. And I think you like this session and I hope you will do revision of our whole the rules and our concept. So let's finish this lecture here and I'll meet you in the next lecture.